Hello everyone. Okay, good afternoon to all of you. I hope you all are good at your homes and doing study about our online lectures is arranged by the college PFIT for you because of COVID-19. Okay, so COVID-19 do not stop you for learning. So now what today's topic of our online session is seafloor spreading. So let's talk about our seafloor spreading topic. Okay, so going for my PPT. Let's start. Today's topic is on about the seafloor spreading. So basically the seafloor spreading is a process that occurs in a mid-oceanic regions where the new oceanic crust is formed through volcanic activity and gradually move away from the ridges. Okay, so basically the seafloor spreading is also called the oceanic floor spreading also. Then the part of our oceanic crust, the process in which the ocean floors is extended when the two plates are moved apart. Okay, after the process, a new crust is formed. The new crust is formed, then when magma piles up on the cracks, it formed a large span of mountains. So basically, the seafloor spreading is a movement of two plates. The two plates are moved to each other to opposite direction. Means we know about the plate tectonic. Plate tectonics move. There are three types of movement of plate tectonic. The first one is a convergent, then divergent, and the third one is a transverse. So where's the move where the plate collide? That means a conversion. Where the plates are separated, that means the plates are divergent, and where the plates are passed to each other, that means the transverse is the movement. The sea floor spreading is the usual process at work at divergent plates. Okay, the boundaries and the two different plates are separated and molten rocks fill up the cracks. Then is developed the sea floor spreading chain process. So one by one we discuss. Mapping the Mid Oceanic Ridge. The Mid Oceanic Ridge is the longest chain of mountain in the world. In the 1950s, scientists made Mid Oceanic Ridge using a sonar. So 1950 में साइंटिस्ट ने मैप्ड किया बाय द सोनार एक्टिविटीज से उसने मिड ओशियनिक रीजस की डिस्कवरी स्टार्ट की. द सोनार इज an instrument that use the sound waves to measure the distance. It bounces sound waves of underwater objects and record the echoes of these sounds. The time that takes the echo indicates the distance to the object. The scientists found out the ocean floor was not flat. The discovery peaked there crucially to discover what is the ridge was and how it go there. Okay, so आपकी जो 1950s में डिस्कवरी स्टार्ट हुई सोनर से उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि आपके जो भी ओशियनिक क्रस्ट है यानी कि वो कैसा है. जैसे ही उन्होंने सोनार वेव्स डाले इस टेक द इको इंडिकेट द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जब वापस रिफ्लेक्ट होकर आपकी सोनार के इको वेव्स आए तो उससे पता चला कि जो आपका ओशियन फ्लोर इज दैट इज नॉट अ flat. Okay, the discovery peak they are closely to discover. Okay, they are a huge, and showing in your diagrams we can show that are the mountain ranges. The mid-Atlantic range is also called. There are a huge mountain range called the ridges that called a mid-oceanic ridge. The evidence of seafloor spreading in 1960, Harry has studied the Wagner's theory. Do you know about the Wagner's theory? Is a continental drift. Then after you come for a seafloor spreading, the 1960 Harry has studies the Wagner's theory. He has proposed the radical idea that is the ocean floor move like a conveyor belt, which is turn move the continents. Okay, so जो उसने आइडिया दिया क्या कर रहे हैं आपके जो ये ओशियन फ्लोर है इज मूव्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट. जैसे कन्वेयर बेल्ट कैसे होते हैं आपके बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें कन्वेयर बेल्ट लगते हैं जिसमें से एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप ही फ्लोट करता हुआ जाता है. जैसे कि आपने एयरपोर्ट्स में देखेंगे या अदर प्लेसेस में देखेंगे या फिर आप जब मॉल्स में जाते हैं जो पे आप चढ़ते हैं वो सीढ़ियाँ इलेक्ट्रिकल सीढ़ीज होती हैं जो अपने आप चलती हैं. दैट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट इज वर्किंग एज अ कन्वेयर बेल्ट व्हिच इज द टर्न मूव टू द कॉन्टिनेंट. This movement begins at the mid-oceanic ridge, which forms along the cracks in the oceanic crust. At the mid-oceanic ridges, molten material rise from the mantle and erupted.
The molten material spread out, pushing all the rock to both sides of the ridges. आपका क्या होता है जब ये मूवमेंट का क्या हो रही है, जो आपकी प्लेट मूव कर रही है या डाइवर्ज कर रही है दोनों अपोजिट साइड में, देन वही क्या हो रहे हैं उससे दैट्स डेवलप द क्रैक्स ऑन द ओशियनिक क्रस्ट एट द मिड ओशियनिक रिज. वहां पे क्रैक्स डेवलप हुए. दैट क्रैक्स, उस पर्टिकुलर क्रैक से क्या हुए, मोल्टन मटेरियल राइज अबव द मेंटल ऑफ इरप्टेड. और जो मेंटल में आपका पर्टिकुलर मोल्टन मटेरियल था वो इरप्टेड हो गया आपके ओशियनिक क्रस्ट में. द मोल्टन मटेरियल स्प्रेड आउट. अब वो पर्टिकुलर मोल्टन मटेरियल स्प्रेड आउट होने लगा धीरे धीरे, पुशिंग ऑल द रॉक बोथ साइड ऑफ द रीजेस. उसने पर्टिकुलरली जितनी भी ओल्डेस्ट रॉक थी उनको आपकी सतह पर ओशियनिक क्रस्ट पे रख दी. हैज द कॉल्ड दिस प्रोसेस सी फ्लोर. इसी प्रोसेस को हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा है. द मोल्टन मटेरियल, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स एंड ड्रिलिंग सैंपल सपोर्ट द हेज थ्योरी. और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स थी एंड ड्रिलिंग सैंपल से उससे हमें हेज थ्योरी को पूरा का पूरा सपोर्ट मिला. सो द नेक्स्ट एविडेंस फ्रॉम अ मोल्टन मटेरियल. अगर हम बात करते हैं मोल्टन मटेरियल से हमें क्या एविडेंस मिला, दैट्स एविडेंस इन द 60s साइंटिस्ट यूज अ स्मॉल सबमरीन कॉल्ड एल्विन एंड एक्सप्लोर द ओशन फ्लोर. ठीक है, एल्विन क्रू फाउंड द रॉक शेप्ड लाइक पिलोज और टूथपेस्ट स्क्वीज्ड फ्रॉम द ट्यूब. अब जो आपका उस पर्टिकुलर एरिया में फाउंड रॉक्स थी उनका जो शेप था इज लाइक अ पिलो और टूथपेस्ट स्क्वीज्ड फ्रॉम द ट्यूब्स. जैसे कि आपका हम स्क्वीज कर देते हैं ट्यूब में से टूथपेस्ट निकाल देंगे तो कैसा हो जाता है, उस तरीके का या पिलो स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स उनको रॉक पे देखने को मिला. दीज रॉक्स सॉइड द मोल्टन मटेरियल एंड इरप्टेड मेनी डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम द क्रैक्स अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की ही. द अर्थ इज लाइक अ गेंट मैग्नेट विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जैसा कि आपको पता ही है. देन द अर्थ इज मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स देमसेल्फ इन 78 years, something around 780,000 years of ago. Rock on the ocean floor are in the pattern of magnetized strips. Okay, जो भी पैटर्न आपके ओशन फ्लोर पे रॉक्स के होते हैं दैट्स अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्ट्रिप. दीज स्ट्रिप्स शो इन द अर्थ रिवर्स इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड. जो वो पर्टिकुलरली शो करते हैं रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग. सो दैट्स अ इंडिकेशन. पीरियड ऑफ नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन, जब नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन था, जब कि आप देखते हैं साउथ पोल और पोलर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो शो करते हैं इन द टर्म ऑफ द पीरियड ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइज्म. अब रिवर्स मैग्नेटाइज्म कब पीरियड हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरफ से ये उस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. पीरियड ऑफ नॉर्मल मैग्नेटाइज्म. और जब पीछे हुए और कुछ नॉर्मल मैग्नेटाइज्म के पीरियड्स धीरे धीरे शो कर रहा है द पीरियड ऑफ मैग्नेटाइज्म. That's also a model of seafloor spreading. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि दो क्रस्ट आपके सेपरेट आउट हो रहे हैं. Then is develop a mid oceanic ridge. Okay, यहाँ पे आप देख रहे होंगे that's a developing a mid oceanic ridges. जब आपके दो ओशनिक क्रस्ट आपस से सेपरेट आउट हो रहे हैं और मोल्टन मटेरियल आपका अर्थ पे आकर एक चैन बना रहा है, द मिड ओशनिक चैन, जिसको हम कह रहे हैं मिड ओशनिक ridges, द ओशनिक क्रस्ट. जब कॉन्टिनेंट और ओशनिक क्रस्ट आपस में सेपरेट आउट होते हैं और एक मेंटल जो आपकी ओशनिक क्रस्ट क्योंकि लेस डेंस होती है और वो सब डक्ट कर जाती है तो वहां पे डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर डेवलप होते हैं, जैसे कि आप सेकंड डीप ओशनिक ट्रेंच में दे रहे हैं. दैट्स ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट. Next is also a diagram of your boundary showing the mid oceanic ridge and the volcanic activity. The divergent boundary is developing. You have different divergent boundary, the mid oceanic regions, and the trenches also developed, and the volcanic subduction is also. The more evidence for magnetic strip. The molten material contains iron. जो molten material जो spread out हो रहा है, that's showing the contents of iron as it is cooled. The iron bits linked up into the direction of earth magnetic poles. और जो iron होते हैं वो indicates करते हैं, lined up होते हैं earth's magnetic poles की ओर. When the rocks hardened, the iron was looped in place, giving the rocky as a permanent magnetic memory. This is showing the permanent magnetic memory. More evidence of magnetic strip. The scientists record the magnetic memory on both sides of the mid oceanic ridge. तो जो सेपरेट आउट प्लेट्स हो रही हैं यानी कि मिड ओशनिक रिज में एक तरफ भी दूसरी तरफ भी मैग्नेटिक मेमोरी सेम था, दैट लाइक द सेकंड साइड ऑफ द part of mid oceanic ridge. They found the strips of when the magnetic field pointed north and the parallel strip that point the south. जो पैरेलल स्ट्रिप थी वो शो कर रही थी दैट्स साउथ पोल को, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ को शो कर रहा है. दैट रॉक द हार्डन at the same time would have same magnetic memory.
एविडेंस फ्रॉम ड्रिलिंग। अभी तक हम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग एविडेंस की बात कर रहे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द ड्रिलिंग सैंपल्स एविडेंस। द ग्लोमर Challenger is a drilling ship that recovered the drilling sample from the ocean floor से उसने लिए। They studied the age of rock sample. They found the further from of ridges, the older the rock. जो आपकी अर्थ सरफेस थी ओशियनिक क्रस्ट की, उसमें जो रॉक्स थे और जो नीचे से आपके स्प्रेडेड आउट ऑल्डर रॉक आए थे, उसमें डिफरेंस आ जाता है। यंगेस्ट रॉक फॉर एट द सेंटर ऑफ द रीजेस। तो आपकी जो यंगर रॉक होती है वो आपके मिड ओशियनिक के सेंटर पे मिलती है और ओल्डेस्ट रॉक्स के स्प्रेड आउट अदर साइड में आपको मिलती है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं अटलांटिक ओशियंस। तो आपका यहाँ आइसलैंड है, यहाँ केरला है, दैट्स रिंग ऑफ फायर भी हम कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट आपकी स्प्रेड आउट हो रही है। ओके, तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग्स में आपकी स्प्रेड आउट प्लेट्स और मिड ओशियनिक रिज को सेपरेट आउट कर रहे हैं, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। Subduction at deep ocean trenches. The ocean floor plunge into a deep underground canyon is called the deep oceanic trenches. The ocean floor plunge into the deep underground canyon that called deep ocean. यानी कि आपका जो much less dense material था oceanic crust का, subduct हो जाता है on the other end of continental crust. Subduction take place where there are deep oceanic trenches. No oceanic crust is hot. It moves away from the mid oceanic ridges and cools, making it more dense. Okay, और ये जो process होती है that's moved from the mid oceanic ridge. Gravity pulls the denser older crust down beneath the trenches. Subduction allowed to the ocean floor to the sink back into the mantle that takes tens of millions of years. और वो ये जो subducted part था वो वापस से क्या होता है आपके sink back into the mantle that takes tens of millions of years. Subduction and earth oceans. Subduction and seafloor spreading change the size and shape of the ocean. अब ये दो प्रोसेस जो सबडक्शन हो रहा है जहां डीप ओशनिक ट्रेंचेस डेवलप हो रहे हैं और जहां मिड ओशनिक रीजन of seafloor spreading changes the size and shape of the ocean. The ocean floor is renewed every 200 billion years ago. और आपका ये ओशन फ्लोर हमेशा 2 साल मिलियन ईयर्स एगो में रिन्यूड होता रहता है। सबडक्शन shown in Pacific Ocean. The Pacific Ocean covers the 1/3 of the planet, but it is shrinking. वो धीरे धीरे सिंक कर रहा है। There is a ring of trenches that are surrounded the Pacific Ocean. उस पर्टिकुलर Pacific Oceans में आपको ring of trenches मिलते हैं जिसको कि हम ring of fire भी कहते हैं। The occurs because of the deep oceanic trenches, shallow, more oceanic crust than the mid oceanic which can produce. If new crust is not added fast enough, the width of oceanic shrink. जैसे जैसे ये oceanic crust not added the fast enough करती है तो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या होती है आपकी श्रिंक होती चली जाएंगी, तो ओशंस आपके श्रिंक हो जाएंगे। सबडक्शन इन द अटलांटिक ओशन आल्सो। द अटलांटिक ओशन इज expanding. The Atlantic Ocean has only a few trenches. The Atlantic Ocean floor is attached to the continental crust of the continent. As the sea floor spread, the continents along the edges also move. So today's topic is finished about that one also. Tomorrow we discussed about the Mid Oceanic Ridge and the paleomagnetism. The last topic of your unit 3rd. Then we discussed about plate tectonic movements on the next video. Okay. So next video we discuss about the paleomagnetism and the mid-oceanic ridges. So I hope you understand